ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लास्ट क्लास का एक जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड द जनरल और सिंपल टाइट्रेशन इन विच यू आर गोइंग टू डील विद an acid base reaction or a redox reaction. In both the reactions you need to equate the gram equivalents of the reacting species, and same will be the number of gram equivalents of each product also. That was point. Mostly हम लोग यहाँ पर अभी तक जो बात कर रहे थे that was the relation between the gram equivalents of the reactants, है ना। और उसकी बेसिस पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात की थी, लाइक KMnO4 व्हिच इज कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट. It was having three different type of N factors in three different mediums, and that's why we need to take care in which medium it is participating in the reaction. KMnO4 का मैंने कलर वगैरह भी बताया था. यू सी यहाँ पे एक ग्रीन बना रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैकिश ब्राउन या कभी कभी ब्राउनिश ब्लैक भी बोलते हैं. एंड यहाँ पे ये या तो कलरलेस या पिंक दिखता है. समटाइम्स इट्स हाइड्रेटेड सॉल्ट विल बी पिंक ऑल्सो. तो कलरलेस या पिंक दोनों तरह के कलर दिख सकते हैं. एंड इफ इट इज चेंजिंग सो मच ऑफ कलर ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेल्फ इंडिकेटर. That means if KMnO4 is involved in a titration, you don't need any extra indicator. ये खुद ही कलर चेंज करके बता देगा that reaction is completed, है ना. ऐसा एक और है जो CE4+ बोलते हैं. अदरवाइज normally this is considered to be a self indicator because the reaction, when the reaction will be completed na, it will be changing its color significantly. Like you see जो पर्पल कलर था वो चेंज हो गया कलरलेस पिंक या ब्लैकिश ब्राउन या ग्रीन में. दीज आर टोटली डिफरेंट कलर्स, है ना. तो ये एक बात की थी. K2Cr2O7 के बारे में फिर बात की. अच्छा, ऑक्सिलेट्स की बात की थी. इसमें ऑक्सिलेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3. तो whenever it will be oxidized it will go to CO2. That means इसका per carbon change was 1, है ना. That was one part. If it is having acidic hydrogen also, it can also participate in acid base reaction, and that's why वहां पे we'll see the number of acidic hydrogen like H2C2O3 or H2C2O4 or H2C2O4.2H2O. that is a dibasic acid, तो उसका N factor by default हम लोग 2 लेंगे in acid base reaction. रेडॉक्स रिएक्शन में भी विल सी द नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन है पर कार्बन 1 का चेंज, सो द नंबर ऑफ कार्बन विल बिकम द एन फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस, है ना. ये बातें भी की थी. इफ यू आर हैविंग अ सब्सटेंस लाइक FeC2O4, इन दैट Fe is also in 2+, so whenever you will be having Fe2+, it will get converted into Fe3+. That means per Fe change will be of 1 if it is in Fe is in +2 oxidation state. But if it is already in +3 oxidation state, like in ferric oxalate, it is already in +3 oxidation state, तो इसके corresponding कुछ भी नहीं होने वाला. So we'll see just the carbon, total carbon 6 दिख रहे हैं, and that's why we'll say N factor is 6. Is it okay? So these are the things हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट में. आई थिंक K2Cr2O7 पे थे. पोटेशियम डाइक्रोमेट which is having an orange color, and then in acidic medium it shows its oxidizing behavior, मतलब it will get reduced to Cr3+. तो per Cr change is of 3. if you are having 2 Cr then change is of 6. ठीक है. Basic medium it doesn't show the redox behavior. It will get converted into chromate which is CrO4 2-. In that also its oxidation state is +6 only. तो ऐसे केस में if you see just the change of ion or if it is participating in the precipitation reaction, then the charge itself becomes the N factor. But if it is changing the oxidation state, तो फिर वहां पर हम लोग total change देखते हैं. तो ये सारी चीजें कर ली थी, इसकी बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे. Now we are moving to the next compound, which is hydrogen peroxide. It is actually oxidizing agent as well as reducing agent. That depends किसके साथ reaction कौन कर रहा है. एंड हम लोगों ने ये थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था. बिकॉज H2O2 में O is having -1 oxidation state. It can have two destination. Either it can go to 0, it can go to -2 also. जब ये -1 से 0 जा रहा है, that means it is getting oxidized, so it will act as reducing agent. If it is going from -1 to -2, तो it is getting reduced, so it will act as oxidizing agent, है ना. तो यहाँ देखो, अगर ये -1 से -2 में जा रहा है, तो it is acting as oxidizing agent. एंड इसका N फैक्टर रिएक्शन से देख लो या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से देख लो, इसका N फैक्टर इज 2. Even if it is acting as a reducing agent in which it is going from -1 to 0, per oxygen changes of 1, so दो ऑक्सीजन के लिए टोटल चेंजेस ऑफ 2. इसका N factor in that also is 2. But if it is not undergoing any reaction with any other reagent, it may also undergo decomposition or disproportionation, and in that case all these two half reactions will be coming,
एंड ओवरऑल फॉर 2 moles ऑफ H2O2, देखो जरा 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज दिख रहा है, सो एन फैक्टर हैज बिकम 1. इज इट ओके अप टू दिस पॉइंट? इतने ही कहानी जान के हम लोग काम कर सकते हैं, बट यहाँ पर पर्टिकुलरली इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फॉर कंसंट्रेशन टर्म. आज तक जो हम लोगों ने सीखा दैट वाज मोलरिटी, मोललिटी, परसेंटेज टर्म्स जितने आते थे वो मोल फ्रैक्शन आता था. इस चैप्टर में आके हम लोगों ने नॉर्मेलिटी सीखा था. एक नया टर्म H2O2 के सॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ. तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज कि अगर तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है इन दैट H2O2 इज प्रेजेंट और उसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की बात करें, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि दिए हुए सॉल्यूशन में जितना भी H2 है, दिए हुए सॉल्यूशन के पर लीटर में जितना भी H2O2 है, इफ इट इज अंडरगोइंग कंप्लीट डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस O2 गैस, देखो रिएक्शन में H2O भी बन रहा है, O2 भी बन रहा है. So when O2 gas is released, तो per liter of given solution से जो O2 निकला उसका वॉल्यूम कितना है at NT, ठीक है, in liter. That will be called its volume strength. So now if I have to relate volume strength with a known concentration term like molarity, percentage, weight by volume, तो कैसे करेंगे? मान लो let a solution of H2O2 has molarity of H2O2 equals कुछ x है. What does it mean? कि 1 liter solution is having, it is having x mole of H2O2. That is the literal meaning of molarity. Na? Now, x mole of H2O2. Now, if you see this reaction, 2 moles of H2O2 will produce 1 mole of O2. So, x mole of H2O2 will produce x by 2 mole of O2. Hai na? Is it okay? And now if it is producing x by 2 mole of O2, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो x by 2 into 22.4 liter O2 at NTP, which means it becomes x into 11.2 liter O2 at NTP. That means हम लोगों ने start किया 1 liter solution of H2O2 in which molarity was x, then volume strength will become 11.2 into x, and that's why we'll say we can write volume strength of, और इसका शॉर्टकट है जैसे मोलारिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को कैपिटल V से दिखाते हैं. तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन V ऑफ H2O2 solution will become its molarity into 11.2. सिंपल है. इसी में मान लो अगर मोलरिटी मालूम है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालेंगे. समटाइम्स दे विल गिव यू द वॉल्यूम स्ट्रेंथ लाइक 5.6 V aqueous solution of H2O2, ऐसा कुछ लिख दिया. दैट मींस दे हैव गिवन यू द वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2 will give you the molarity, है ना? Is it okay? Can you relate वॉल्यूम स्ट्रेंथ विद परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम? ये तो मोलरिटी हो गया. कैन यू रिलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम विद वॉल्यूम स्ट्रेंथ? कहीं डाउट है तो पहले तो पूछ लो, एंड देन उसके बाद बताओ मेरे को. कहीं डाउट है तो पूछो पहले. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क. इफ आई आस्क यू relate percentage weight by volume of H2O2 solution with its volume strength. ट्राई करो जरा. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्लियर है?
Any answer? What do you mean by percentage weight by volume? This says, if I say percentage weight by volume is Y, it means it says 100 ml solution has Y gram H2O. ठीक है, अभी बताओ जरा, कैन वी रिलेट इट विद मोलरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ? किसी एक से कर लेंगे तो फिर दूसरे से कर ही लेंगे. So it means if I'm having 1000 ml solution, it will have 10 times Y gram H2O2 है ना. Now if I'm having 10 Y gram H2O2, it means it is 10 into Y upon, you can divide it by the molecular mass to get the moles, है ना. So divided by, if you see 34, these many moles of H2O2 is there. Is it okay? And now if you have got moles, तो पिछली बार जैसा काम किया तो वही काम करेंगे. पिछली बार x mole H2O2 आया था तो x by 2 mole O2 बन रहा था. So we will say this will have 10y upon 34 into 2 mole H2 O2 it will produce, and which will have volume 10 times y upon 34 into 2 into 22.4 liter O2. So this will become the volume strength. If you calculate it, if you see the number, ऊपर दिख रहा है 224 और नीचे दिख रहा है 68. This much into y liter O2. Is it okay? So if you calculate it carefully ना, तो almost 3.3 जैसा आ जाएगा, 3.3 जैसा कुछ आ जाएगा. This much into y liter O2. ठीक है. So इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो that says, this relation says volume strength is equal to 3.3 times percentage weight by volume. So if you want to calculate percentage weight by volume, this will become volume strength upon 3.3 जैसा, upon 3.3 जैसा. Or you can also say this is very close to 0.303 into volume strength. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस थिंग इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. हाइड्रोजन चैप्टर में जाओगे इनऑर्गेनिक में तो ये टर्म मेंशन किया हुआ है. दैट्स व्हाई वी आर सपोज्ड टू नो दैट. वहां क्या लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली इफ यू आर हैविंग 100 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ना, तो दैट विल बी 30% वेट बाय वॉल्यूम. इट इज एक्चुअली 30.3 जैसा आता है. सो वी कैन से 100 वॉल्यूम स्ट्रेंथ is 30.3% weight by volume. वेरी क्लोज टू 30 बोल सकते हैं, जैसा एनसीईआरटी ने लिखा है इसको 30%. So this is the relation between percentage weight by volume and volume strength. Any doubt? Anyone having any doubt? Okay, so let's see. So this was the relation. मैं इसको summarize कर देता हूँ. This is the relation, actual relation, है ना. Now एक और टर्म आता है जो मैंने बोला, नॉर्मेलिटी विल बी कमिंग. नाउ इन जनरल ये डेफिनेशन तो आया डिकम्पोजिशन से, बट इन एनी रिएक्शन इफ दे हैव गिवन यू द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो वहां से अगर नॉर्मेलिटी तक जाना है तो H2O2 या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. while it is acting as oxidizing agent or reducing agent, its n factor was 2, and that's why in that case we can say normality is molarity into 2, and that means it has become volume strength in upon 5.6 है ना, क्योंकि molarity was equal to volume strength upon 11.2 है ना. Is it okay? देख लो सब लोग, कहीं डाउट है तो बोलो, कुछ तो बोलो, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन देना No, sir, no doubt. ओके, then start solving the questions.
वाली इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देन विल स्टार्ट, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाना है. स्टार्ट, सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट. I'll write other results also here only, so that you can have that idea. Any answer? Yes, sir. Okay. Okay, let's see. Molarity is 1.5 है ना. If molarity is 1.5, that means volume strength is 1.5 into 11.2 times है ना. Is it okay? And that becomes, if you see, 11.2 plus 5.6, that is 16.8 times. And the meaning of volume strength was जितना volume तुमने solution का लिया है, उसका volume strength times will become the volume of O2 gas at NTP released, है ना. So that's why volume of O2 gas released at NTP will be 10 ml लिया था तुमने volume, तो that much into 16.8, that is 168, है ना. तो 3 will be the answer. Simple. सर एक सेकंड ऊपर जा सकते हो तो? हाँ जी. किधर जाना है? Basic definition. या सर. Yeah, this was the definition. Okay. या सर. Chalo, solve the next one. Solve this one. सर क्या है, सॉर्ट ऑफ लाइक टाइट्रेशन टाइप है क्या? टाइट्रेशन ही चल रहा है ना अभी. हाँ नहीं, वही पूछ रहा था सर. टाइट्रेशन ही है. सर एक बार दिखा सकते हो क्या कि MnO4 एसिड में सर वो Mn +7 से +2. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी, कोई नहीं Mn2 बता plus पाएगा. सर नीचे का नीचे का. हाँ. हाँ जी, यहाँ है, देखो ये तीनों बिहेवियर यहाँ दिखे हुए हैं. ठीक है. हाँ सर हाँ हो गया है. ओके. टैक्सी.
एनी आंसर? इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए. सी. C you are saying? Okay. I don't remember the answer actually. No, I don't have answer. Okay. Let's see. Enough time given. Simple सी चीज है. We are knowing that कि ग्राम equivalents बराबर करने. That's the only thing we have. है ना? Now, if I'm having 10 ml solution, क्योंकि ये strength दिया हुआ है and the units are gram per liter. That means it is saying simply per liter how many grams of H2O2 are present, है ना? तो percentage weight by volume was 100 ml में how many grams are present? That was the meaning of percentage weight by volume. It is just the 10 times of that, है ना? तो strength in gram per liter is nothing but 10 times percentage weight by volume, because percentage weight by volume is how many grams are present per 100 ml. So it is asking just per liter kitna present hai na. That is the meaning of this term. That's one part. But if you have got 10 ml of solution, मान लो strength is x gram per liter. So that means 1 liter is having x gram H2O2 hai na. So 1 liter has x gram H2O2, which means 10 ml is having how many grams by 100, है ना? So these many grams H2O2 is equal to x by 100 into 1 upon 34 कर लो, that many moles of H2O2. Is it okay? या फिर तुम सीधा यहाँ से वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे भी जा सकते थे, बट उधर जाने की जरूरत नहीं है. सिंपली वी हैव गॉट दिस थिंग दैट वी आर हैविंग दीज मेनी मोल्स. इज इट ओके? क्लियर है यहाँ तक? यस सर. दीज मेनी मोल्स. हाँ जी. नहीं समझ गया. Okay. So now these many moles will react with how many moles of KMnO4? So we are saying x upon 100 into 34 into n factor of H2O2, because KMnO4 is going to act as oxidizing agent. This will act as reducing agent. Whether it is acting as oxidizing or reducing, its n factor is 2. है ना? So this much into 2 will be equal to gram equivalents of that thing. है ना? So 1 by 50 is the molarity into 25 by 1000 becomes moles, and इसका n factor in presence of acid is 5. Is it okay? बस इसी को solve करना था. If you solve it, we are getting, देखो ना, x upon 1700 आ रहा है, तो पहले तो इधर से ही कैंसिल करा लो. 1 से 2 टाइम्स, देन 2000 to 100 से 10 टाइम्स हो जाएगा. दिस इज 10 टाइम्स. नाउ वी हैव गॉट 17 ऊपर जाएगा तो 85 by 20. Is it okay? That is 4.25. So this will be the answer. कहाँ प्रॉब्लम कहाँ हुई? आई थिंक देवी तुमने सी बोला था क्या? हाँ मैंने बोला था. क्या प्रॉब्लम हुआ? एक सेकंड सर. इनफैक्ट मिल गया था. सर इनफैक्टर. अरे. H2. अरे मैंने सर गलती से. हाँ ओके. मैंने सर 2 की जगह आई थिंक 5 ले लिया. 5 तो KMnO4 का, दैट इज ओके.
हाँ हाँ ओके, हाँ 2 नहीं, मैंने 1 लिया, हाँ वही मैं सर वन ठीक। नहीं लेना है ना। H2O2 का कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है, देन ओनली इट्स एन फैक्टर इज वन, अदरवाइज इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, एंड फैक्टर इज 2 है ना। हाँ सर, मैंने कंप्लीट डिकम्पोजिशन ले लिया गलती से। दैट्स रॉन्ग ना, इट इज रिएक्टिंग विद KMnO। हाँ यस सर, अंडरस्टूड। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। टेल मी द आंसर ऑफ दिस। Now, this is the chance that you revise your mole concept, particularly stoichiometry and concentration terms. And if you have any doubt, just ask. Solve this question. So K2Cr2O7 with acid का क्या change है? Cr3 plus में जाता है, that we are supposed to know now, है ना। धीरे धीरे याद रखना पड़ेगा। Yeah. Cr2O7 2 minus in acidic medium, अगर H plus है तो it will go to Cr3 plus. This is orange in color, this is green in color. Okay, one has given 15 in ml ना पर। Yes, sir. Yes. Okay, let's see. बाकी लोगों का कोई आंसर? 2 minutes और दो. Okay. ओके, तब तक परम के लिए मैं गिव यू अनदर सर क्वेश्चन। बोल हाँ। सकता हूँ आंसर? हाँ जी, सर आंसर बोल सकता हूँ? बोलो। सर 14.3 या 5 ऐसा कुछ आ रहा है। ऐसा आ रहा है क्या? आई डोंट हैव द आंसर, मुझे देखना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी।
Enough time given. Once हो रहा है क्या? बहुत लंबा पता नहीं, शायद हो रहा है, अब कर लो चलेगा. Okay, let's see. This is 20 ml, which is diluted to 200 ml. First thing, dilution doesn't affect what? What is not affected by dilution? Number of moles. Number of moles will not be affected, है ना? तो ये देखो 20 into 1 is 20 millimoles of K2Cr2O7 was there, है ना? So you are having जब 20 ml solution है ना, तो it has 20 millimoles, because ml में अगर molarity convert multiply करते हैं we get millimoles. These many millimoles of K2Cr2O7 we have, है ना? Now we are taking a 25 ml sample. पहले तो इसको dilute किया to 200. So that means even in 200 ml solution, which is coming through dilution only. So that's why this will also have only 20 millimoles K2Cr2O7. Now it says इसका 25 ml sample लिया है. Now we have taken a sample. While taking the sample, what doesn't change? When you take a sample, what is not changed? It is the concentration. Concentration. Concentration will not change, and that's why whatever was the concentration, either you can calculate it also, or otherwise, this proportion में you are taking the volume. Now same proportion में moles will also become. So if you are taking sample at 25 ml, it is 1/8 of the original sample, है ना? तो 1/8 आया, तो this will also contain, ये जो 25 ml है ना, this will contain 20/8 millimoles of K2Cr2O7. Is it okay? Clear? It is 2.5. Now it is being mixed with 50 ml 4m H2SO4 solution. So इसमें if I am adding 50 ml H2SO4 solution, have I changed the millimoles of K2Cr2O7 till now? I have not changed, है ना? So whatever 75 ml solution is there, in that we have got 2.5 millimoles K2Cr2O7. Okay. Now it says 30 ml of this solution is diluted to 150. Again, we have taken a sample. This was just to give you the idea of all the application of concentration term, dilution, addition, mixing the solutions. ये सब देने का एक तरीका है ये. So 30 ml of this solution. तो इसका अगर हमने 30 ml ले लिया है, so that will contain, ये 30 is, if you see it ना, ये 2/5 times of 75 है ना. So that's why it will have 2.5 into 2/5 millimoles K2Cr2O7, which means it is 1 millimole. Clear है? Now इसको बोला it is diluted, तो again dilution से तो फर्क नहीं पड़ता ना. तो even if it is diluted ना, even if it is diluted, we still have 1 millimole K2Cr2O7. Okay? Clear है? सर वो Yes, sir. H2SO4 वाला स्टेप वापस समझा सकते हो क्या? फिर से we are having 25 ml solution which is having K2Cr2O7, है ना? Now we are mixing it with 50 ml of H2SO4. H2SO4 is to give you the acidic medium so that it can act as oxidizer. ठीक है? That was the purpose, but you are mixing it, and that's why mixing करने से क्या होगा? मेरे पास एक solution है जिसमें K2Cr2O7 है. Whatever solution I have mixed with it, if it doesn't have any K2Cr2O7, तो K2Cr2O7 के millimoles तो same ही रह जाएंगे ना? Is it okay? या सर. मैंने पानी में शक्कर डाला हुआ है, उसमें मैं नमक वाला पानी मिला भी दूं तो शक्कर के मोल्स तो उतने ही रह जाएंगे ना. इट इज नॉट चेंज ना, सिंपल. एंड दैट्स व्हाई ये 20/8 is 2.5, तो उतना ही मोल्स कैरी कर लिया, मिली मोल्स. इज इट ओके? एंड उसके बाद फिर से हम लोगों ने सैंपल लिया, तो सैंपल लेने में जिस प्रोपोर्शन में सैंपल लेते हैं उसी प्रोपोर्शन में मोल्स कम हो जाते हैं ना, उसी प्रोपोर्शन में मोल्स आते हैं. दैट्स व्हाई 75 का 2/5 टाइम्स इज 30, and that's why इसका 2/5 times हम लोगों ने ले लिया, which is 1 millimole. And again by dilution millimoles of the solute will not change, and that's why we still have 1 millimole of K2Cr2O7.
ये पूरी जर्नी कर लेने के बाद नाउ इट इज आस्किंग व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.02 m H2O2 सॉल्यूशन इज नीडेड टू टाइट्रेट 15 ml। ये जो बाद में आया ना 150 ml, इसका भी 15 ml ले लिया, इसका 15 ml सैंपल लिया है, एंड दैट 15 ml सैंपल will give you 0.1 millimole। अगर यहां तक सक्सेसफुली पहुंच गए तो इसके आगे की कहानी एक लाइन की है, दैट 0.1 into 6 will be milli equivalents of K2Cr2O7, बिकॉज इसका n फैक्टर इज 6 है ना, दिस विल हैव, इसका n फैक्टर इन दिस केस इज 6, सो दिस मच विल बी, इसका देखो मोलरिटी दिया हुआ है 0.02, वॉल्यूम पूछा है, मान लो V in ml ले लिया तो ये मिली मोल्स दे देगा, इनटू n फैक्टर ऑफ इट इज 2, so that's the only thing we have to calculate. Now V will be, if you see 0.6 upon 0.04 है ना, so that becomes 60 upon 4, that is 15 ml. This will be the answer. Calculation इतना ही था। पूरी कहानी तुमको ये सिखाने की थी कि जब जब सैंपल लेते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, what is the effect of these three things particular, ठीक है? This is having 15 ml, that will be the answer. Any doubt? Anyone having any doubt? If you don't have the doubt, then solve the next one. Last step is just simple, this one, gram equivalents equal किया है या milli equivalents will say in this case. Millimoles into n factor will give you milli equivalents. Tell me the next answer. दिव्य किधर मिस्टेक हुआ था लास्ट में? सर नहीं, सही क्या था, मैं बस थोड़ा ऊपर ऊपर से कैलकुलेशन किया। नहीं तो वो डेसिनॉर्मल सॉल्यूशन मतलब AC नॉर्मल, ओके, ये वर्ड्स नहीं आए पहले। इफ आई एम हैविंग, जैसे इफ आई से मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब होता है मोलरिटी इज 1। इफ आई एम हैविंग डेसी मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है मोलरिटी इज 1/10। इफ आई एम हैविंग सेंटीमोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है मोलरिटी इज 1/100, एंड वन मोर टर्म इज देयर, ऐसा ही डेसी मोलर, मिली मोलर भी हो सकता है, बट एक और वर्ड है जो इनसे अलग है थोड़ा, सेमी मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है मोलरिटी इज 1/2। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड m/10 solution, that also means molarity is 1/10। this can be called m/100 solution, that means molarity is 1/100, this will be called m/2 solution। जैसे देखो ना, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा था, यहाँ देखो which question I think इससे पहले, हाँ, see I have written m/50 KMnO4 solution, that means molarity was 1/50। okay, तो सर वैसे ही, ऑप्शन हाँ बोलो, सर ऑप्शन का रेंज कैसा रहता डेसिनॉर्मल है? क्या क्या, फिर से पूछो। डेसिनॉर्मल एंड डेसिमोलर आर सेम। नो, देसी नॉर्मल का मतलब हो गया नाउ, नॉर्मेलिटी इज 1/10, नॉर्मेलिटी इज 1/10, एंड नॉर्मेलिटी वाज रिलेटेड विद मोलरिटी, नॉट नेसेसरली इक्वल, है ना। नॉर्मेलिटी इज 1/10, एंड इफ यू रिमेंबर, नॉर्मेलिटी इज मोलरिटी इनटू n फैक्टर, इनटू n फैक्टर, ठीक है। सर मैं पूछा था ऑप्शंस का रेंज कैसा रहेगा? बिल्कुल आइडिया नहीं मुझे, बट अच्छा मतलब इफ यू सी ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो आता है ना, वो जैसे 2.8, 5.6, 11.2, 10, 20, इस रेंज में, ऐसा
ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि देखो ना, मोलरिटी अपॉन 11 मोलरिटी इंटू 11.2 वाज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो मोलरिटी का आंसर अगर 1 आना होगा तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 आएगा। मोलरिटी का आंसर 0.5 आना रहेगा तो 5.6 आएगा। तो दैट टाइप ऑफ आंसर्स यू आर एक्सपेक्टिंग 1 से लेकर 20-25 के रेंज में वो दिखता है। ठीक है, ओके ओके सर। ट्राई करो जरा इसको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। Okay, any answer? 0.42. Okay, 0.42 you are saying. Anyone else? Manush, Param. Okay, let's see. एक एक करके देखते हैं. Let's see. First thing, what we have is 10 ml of an aqueous solution containing H2O2. So we have H2O2 in 10 ml solution, and it was having some H2O. Now it is being diluted because we are adding water to make its volume 250 ml.
So through dilution, we are making it 250 ml, है ना? तो मान लो इधर if it was having x millimoles, it will still have x millimoles. Now it says 25 ml of this solution required 18 ml. So 25 ml of this solution, we are taking the sample, and that is 25 ml. That means we are making it 1/10, है ना? So 25 ml will have H2O2, 1/10 of that. So that means x by 10 millimoles is there. नाउ इसमें तो यहीं तक रुक गया, तो प्रैक्टिकली एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा इतना ही देगा, 2-3 स्टेप की बात करेगा, एक डाइल्यूशन बात की, एक सैंपल की बात की, देन देयर इज रिएक्शन. Right, says it is having 18 milliliter of desi normal solution of acidified KMNO4. Now we'll say gram equivalents और milli equivalents की भी बात कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली. So milli equivalents of H2O2 will be equal to milli equivalents of KMNO4. Now if you see this thing, in milli equivalents we have got these many moles, so x by 10 millimoles into इसका n factor is 2. Now if you see volume, normality was gram equivalents of solute upon volume in liter, so that's why normality into volume in liter gives you the gram equivalents directly. So normality into volume in ml will give you directly the milli equivalents, है ना? And that's why if I'm having 1 by 10 is the normality and 18 ml is there, 1 by 10 is the normality and 18 ml is the volume, this itself will give you the gram equivalent, milli equivalents. Is it okay? There is no use of n factor of KMNO4 if they have given you the normality directly. And that's why now we are getting x becomes x by 5 is, so 10 by 10 cancel kar do, x is coming 9. That means this is 9. What they are asking? It is asking calculate the volume strength. तो millimoles पता है, volume पता है, तो molarity has become millimoles, which is 9 upon 10, that is 0.9, and that's why volume strength will become 0.9 is the molarity into 11.2, है ना? तो 1.12 कैंसिल कर दो, तो 1 गया तो 10 में से 0.2 गया तो 10.08, है ना? That will be the answer. This much V will be the answer. Once, what was the mistake? This much was not your answer, na? One sec. I got x is 9. Yeah, x is 9 is okay. In this case, x is 9. But x was millimoles in 10 ml, है ना? Oh, I took 240 ml of H2O2 is given. Why See, but 240 the ml of H2O? It is saying we are having 10 ml aqueous solution of A containing oh, H2O2. acha, I took 240 ml of H2O2. No, no, My that was bad. Sorry. okay. Anyone else having any doubt? Srishti, Ranbir, Om, any doubt? चलो next एक और try करते हैं and then we'll move to the next compound. Solve this one.
लाइन लगना पड़ता है प्रयास। Any answer? Two more minutes. Okay. Okay, let's see the reaction क्या हो रहा है पहले, then we'll talk about कि आगे करना क्या है. Basically it says H2O2 is reacting with Ki. So almost 4, tending to 4. Okay, and this is producing I minus is giving you I2 है ना, that's why it has written already that iodine is liberated है ना. And then if ये -1 से 0 जा रहा है, that means इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन होगा ना. तो इसका रिडक्शन का मतलब है either it will be producing H2O or we'll say OH minus, दोनों में -2 है, whatever you want to take, but इसका n factor is 2. That's fixed, either as oxidizing agent or reducing agent, its n factor is 2. That's one simple thing. Now that I2 is reacting with Na2H2O3, that is going to be our next compound जिसकी बात हम लोग करेंगे. This is called sodium thiosulfate or this is also called hypo. ठीक है, इंडस्ट्रियली और कॉमर्शियली इसका नाम हाइपो भी है. And then it is going to produce I minus, or we'll say I'll just write the complete reaction. So it says it will form NaI plus ये जो सब्सटेंस है ना, this produces Na2S4O6. If nothing is written, this is the final product. Now if you see, this was in +2, average oxidation state here is +2.5, and that's why इसका n factor अगर जानना है तो we'll say how much will be the n factor, tell me. 2. 3. ध्यान से, +2 to 100. +2.5. 0.5 का change per sulfur, we have just 2 sulfur 1. here, 1. and that's why 0.5 into 2, that is 1. Now if you see in this whole story, the number of gram equivalents of H2O2 will be equal to number of gram equivalents of I2 produced, है ना. I took 3.5, मेरा mistake हो गया. That will be equal to number of gram equivalents of this compound, and that's why we are saying gram equivalents of H2O2 can directly be written as gram equivalents of Na2H2O3 required. Okay, and that's why we can directly write, it has given you वॉल्यूम दिया हुआ है एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ मान लो x is the volume strength. Whatever they have asked you, assume that as x. So if x is the volume strength, x upon 11.2 was the molarity, and that much into n factor is 2, so that becomes the normality है ना. And then this much या फिर molarity, once you know that much into volume in liter,
becomes moles, and that much into 2 becomes the gram equivalents, है ना? And that will be equal to Na2H2O3 के लिए we have got molarity 0.3, volume in liter is 20/1000, n factor is 1, and that will give you the answer. So now if you see, in this case, if you solve it, 1000 will get cancelled. इधर देखो 6 आ रहा है, तो it is 6 into 11.2 upon 50. Okay, अगर इसको 100 करना है तो 22.4 into 6, so 22.4 into 6, 132 plus 2.4, 34.4 upon 50, upon 100 हो जाएगा. 100. Okay, so that's why it will become 1.344. This will be the answer. Is it okay? Any doubt? एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रहा हूं. Solve this one. So again, normality is This molarity capital into is n factor, right? normality, है ना? You're asking about the formula? Molarity into n factor. हाँ, molarity into n factor is normality, and normality was also volume strength upon 5.6. And this was equal to molarity into n factor. A. Okay. So basically, when you are mixing the two So solutions. 2 minutes. Okay, no problem. Take your time. हाँ सर ये आ रहा है. Okay. So basically, if I just add two solutions and if there is no reaction, H2O2 के लिए gram equivalents will be conserved, है ना? So we'll write normality ही directly काम कर सकते हैं because we are not having any reaction till now. So normality in final solution will be total gram equivalents या फिर total milli equivalents ले लो because ml में दिया हुआ है. So total milli equivalents of H2O2 upon total volume of solution. And that's why we will say
This is 10 times 1.5 because normality into volume in ml gives you milliequivalents plus 10 times 2.5 upon 10 plus 10. And that's why it will become 2. And if normality is 2, then volume strength is 5.6 times of that. 2 times 5.6, that is 11.2. This will be the answer. And that is this thing. Now let's move to next compound. Any doubt up to this point? Anyone having any doubt? Okay, let's go to next compound जिसकी बात मैंने अभी just की थी. That we are having a compound called Na2H2O3, which is called sodium thiosulfate. Its commercial name is hypo also. So hypo जब बोलते हैं तो we consider Na2H2O3.5H2. In this, if you see the structure, ये तो resonance के बाद ऐसा लिख दिया है. Why it is called sodium thiosulfate? Because if I am talking about sulfate ion, this is called sulfate. And in sulfate, if you see, we are having this bond. If I just draw one resonating structure, this is the bond. Now, इसी में if you replace one oxygen by sulfur, this will be called thiosulfate, है ना? And that's why we are having thiosulfate में average oxidation state is +2, and +2 से it can have multiple tendencies. It will act as reducing agent only generally. So that's why it will oxidize, but oxidize होने के इसके दो destination बनते हैं. One destination is if you're having acidic medium, or if medium is not given, then we'll say कि it will go to sodium tetrathionate. What is that tetrathionate? This is called tetrathionate, जिसकी बात अभी just मैंने ये बनाया था product. In that, this S4O6 2 minus में, if you see the oxidation state average is 2.5. एक्चुअल वॉज मैंने पहले भी डिस्कस किया था, 2 +5 वाले होते हैं, 2 0 वाले होते हैं, बस एवरेज इज 2.5. सो +2 से +2.5, 0.5 का चेंज पर सल्फर. थायोसल्फेट इज हैविंग जस्ट 2 सल्फर, सो 0.5 इंटू दिस इज एक्चुअली 0.5 इंटू 2. और यहीं पे ये जो आया है वो दैट इज 0.5 इंटू 4. But in basic medium, and that you'll use only if they have given you the basic medium, then it will form the sulfate. And when it is forming the sulfate, +2 से +6 जाना is 4 का change per sulfur, and that's why total change will be 4 into 2, that is 8. And in this case, we have just one sulfur, so that's why it is 4 into 1. Is it okay? That much information we are required to know. अब इतने से देखो एक क्वेश्चन जस्ट करवा देता हूं मैं, बिकॉज जस्ट 1 or 2 रिएक्शंस विल बी कमिंग. आगे आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. आगे जाकर आई विल बी डिस्कसिंग समथिंग कॉल्ड आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन. इनफैक्ट ये जो मैंने क्वेश्चन तुमको करवाया ना, ये वाला, दिस इज नथिंग बट एन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्वेश्चन था. उसको डिटेल में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. बट एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इससे. सॉल्व दिस वन. ओके, एटॉमिक मास दे देता हूं मैं. एटॉमिक मास ऑफ आई इज 127. एसिडिक में 2.54. 2.54. ओके,
बेसिक में उसका 8 times. 8 times. Okay. If it is going from I2 to I minus, even if it is not given now, we'll consider that key. Sorry, to oxidize all the even if it is not given कि ये क्या किस फॉर्म में जाएगा, we'll consider that to be going in I minus. So ये 0 से -1 में जा रहा है, that means 1 का change per I, so n factor is 2. That's one part. Now it is talking about two different medium. So we'll talk about acidic medium. We know the conversion. In acidic medium, n factor of already we have discussed that n factor of S2O3 2 minus is 1. So we are saying minus, you are saying 4.96. First का answer you are saying? हाँ सर वैसा कुछ आ रहा है. Let's see. So assume that ki this was x gram. So x upon 254 will become its moles, and into 2 will become its gram equivalents. Is it okay? Let सर भाई 254 क्यों? 1 minute. Someone will call you. हाँ, now tell me. अच्छा नहीं. 127 was atomic mass. So I2 का molecular mass will become 254 है ना. Let x gram I2 be required. So if x gram I2 is required, x upon 254 is moles into n factor of I2 is the gram equivalents, and that should be equal to 0.4 is the molarity, 100 upon 1000 is volume in liter, into hypo solution ka acidic medium n factor is 1. And that's why we have to solve this much only. If you solve this one, this is coming 10, so 0.04, x is coming 0.04 into 127 gram. Is it okay? Once, what was the mistake? This will become 5.08 gram. I took AMU as 127. That's why I got half. Understand that? I have given you atomic mass. I2 is the molecule which will be having molecular mass 254, not 127. Is it okay, everyone? David, clear kya? Basic medium. Now you know everything. Let y gram be required. बस इतना हुआ है कि n factor has been changed, है ना? So we'll write again y upon 254 into 2 will be equal to 0.4 into 100 upon 1000 into, this time n factor is 8, and that's why we'll say y will be जितना पहले आ रहा था उसका 8 times हो जाएगा ना, so it will be finally 5.08 into 8 times, and that will be 40.64 gram. This will be the answer. Okay. Now there is one more compound जिसका as such कोई direct relation तो नहीं है इस chapter में, लेकिन again it is also talking about some concentration term, and that's why we can use that. और normally इधर ही पढ़ा देते हैं कोचिंग में, तो यही सिस्टम है कि we generally cover this because numerically इसको कहाँ फिट बैठेगा, तो sometimes we can also talk about कि concentration term जहाँ करते हैं वहाँ भी करते हैं, but normally there is a culture कि इधर ही पढ़ाते हैं, that is called oleum. Or this is also called fuming sulfuric acid. And what does it mean? It means you are compressing SO3 inside H2SO4, and that's why we can represent it H2SO4 dot XSO3. We don't know how much SO3 we have compressed. कुछ जगह इसी को लिख देगा H2S2O7, which is wrong to say because you are not saying कि 1 mole of H2SO4 के साथ 1 mole of SO3 रहे. And second thing is H2S2O7 is another molecule which is having a particular structure. It is simply SO3 gas compressed in H2SO. That is the meaning of this oleum. Is it okay?
ना अब ये जो ओलियम है ना, इसमें जैसे H2O2 में वी आर हैविंग वॉल्यूम स्ट्रेंथ करके एक टर्म, वैसे यहाँ पर भी ओलियम के लिए भी देयर इज अ टर्म कॉल्ड परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि तुम्हारे पास मान लो 100 ग्राम ओलियम है. ओलियम इज हैविंग H2SO4 एंड इट इज हैविंग SO3. इफ आई ऐड वाटर इनटू इट ना, तो क्या होगा? when water is added to oleum na, when H2O is added to oleum, तो क्या होगा? ये जो SO3 उसके अंदर है ना, that will react with H2O to form H2SO4. और ऐसा करने से मान लो इनिशियली दिस वाज कुछ x ग्राम था मान लो, और ये कुछ मान लो y ग्राम था बिफोर रिएक्शन. तो आफ्टर रिएक्शन जब ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा इधर कन्वर्ट होगा एंड 80 ग्राम प्रोड्यूसेस 98 ग्राम, है ना. 1 मोल विल प्रोड्यूस 1 मोल. चलो मैं मोल्स में अभी लिख देता हूँ, बाद में इसको एक्चुअल कैलकुलेशन करके देखेंगे. मान लो दिस वाज x मोल एंड दिस वाज y मोल. नाउ दिस विल बिकम x प्लस y मोल, है ना. Which means when you are adding water into oleum, it will increase the mass of H2SO4 in it, है ना. So if you are having 100 gram oleum, how much H2SO4 net will be finally on addition of sufficient amount of water? That is called the percentage labeling of oleum solution. That is the basic definition, that if you are having 100 gram oleum, उसमें if you add water so that the mass of H2SO4 obtained after dilution, वो जितना भी आएगा that much will be called the percentage labeling in oleum. मान लो तुम्हारे पास जो ओलियम दिया हुआ है, इसका percentage by mass of SO3 is X, which means in 100 gram sample, SO3 was X gram and H2SO4 initially before reaction with H2O was 100 minus X gram. Is it okay? And now if I am having reaction between SO3 and sufficient H2O, this will be excess or sufficient you can say. So after reaction जब ये पूरा चला जाएगा, तो फिर यहाँ जो प्रोडक्शन होगा, इफ यू सी जस्ट स्टोइकियोमेट्री लगाओ, 1 मोल विल प्रोड्यूस 1 मोल, दैट मीन्स 80 ग्राम विल प्रोड्यूस 98 ग्राम, है ना. इज इट ओके? 1 मोल ऑफ SO3 का मतलब है 80 ग्राम, 1 मोल H2SO4 का मतलब है 98 ग्राम. दैट मीन्स विल से 80 ग्राम विल प्रोड्यूस 98 ग्राम. सो x ग्राम विल प्रोड्यूस 98 अपॉन 80 इंटू एक्स ग्राम, है 98 अपॉन 80 इंटू एक्स ग्राम. Now, if you solve it, we are getting 100, and if you solve it, then we are getting 18 in upon 80 into x, which can be written as 100 plus 9 upon 40 into x, this much gram. तो अगर हम लोगों ने 100 ग्राम सैंपल ऑफ ओलियम लिया था, तो दैट इज गिविंग यू 100 plus 9 by 40 into x gram H2SO4, and that means ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है, दिस विल बिकम द परसेंटेज लेबलिंग. वहां पे x क्या है? x was the percentage by mass of SO3 in the mixture. तो as a whole the formula becomes the relation between percentage by mass and percentage labeling of oleum gives you that if you want to know percentage labeling, then it is simply 100 plus 9 by 40 times percentage by mass of SO3. Is it okay? सिंपल सा रिलेशन है. इसको देखो और जरा फटाफट फिल दिस टेबल. कहीं डाउट है तो पहले पूछ लो. इफ यू हैव एनी डाउट पहले पूछ लो, इसमें कहीं डाउट है? एनी डाउट इन दिस पार्ट? नो डाउट्स? देन इसको जरा फटाफट फिल कर लो. देन आई विल गिव यू अ गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट.
इसी का दूसरा उल्टा रिलेशन निकाल सकते हैं, परसेंटेज बाय मास ऑफ SO3 will be percentage labeling minus 100 into 40/9, है ना? तो जो भी दिया हुआ है उसमें -100 करो, इंटू 40/9 कर लो। 100 दिया हुआ, -100 कर लिया तो 0 हो जाएगा, तो दिस इज 0। देयर इज नो SO3, तभी तो परसेंटेज लेबलिंग 100 ही रह गया, बिकॉज देयर इज जस्ट H2SO4। सो इवन इफ यू आर एडिंग वाटर, इट इज नॉट अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ H2SO4। दैट मींस दिस सैंपल विल हैव 100% by mass of H2SO। What about the next one? If you subtract 20%। 100 from, तो 4.5 आया, अपॉन 9 तो हाफ आया, इंटू 40 तो 20% आया, ये तो 80% ये रहेगा। यहाँ पे कितना आएगा? सर 40। 40, अभी पैटर्न 40, होगा ना। 70, 60, 80, 100। तो this will become 60, this will become 40, this will become 80, this will become 20। यहाँ पे 100. लास्ट 100, 100 आ रहा है, दिस इज 0, विच मीन्स इट सेज, देखो कोई भी SO3 का परसेंटेज इसी बीच में होगा ना, 0 से लेकर 100। इसका मतलब है परसेंटेज लेवलिंग कैन बी ओनली इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, है ना। सो इफ समवन इज सेलिंग ओलियम विथ परसेंटेज लेवलिंग मोर देन 122.5, बेवकूफ बना रहा है वो पब्लिक को, है ना। सो विल से परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम कैन नेवर बी less than 100 and can never be greater than 122.5, है ना। इसी बीच में रहेगा कहीं। इक्वलिटी क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इफ देर इज नो H2SO4 तो उसको SO3 ही बोलेंगे, देर इज नो H2SO4, उसको ओलियम काय को बोलेंगे। तो एंड पॉइंट पे मैंने नहीं दिया, बट इफ यू आर हैविंग इन बिटवीन कोई भी नंबर दिया हुआ है, तो इट्स वैल्यू शुड बी इन बिटवीन 100 and 122.5। So एक मिनट ऊपर जाओ ना ये वॉल्यूम को. ओके, हाउ मच? दिस मच? हाँ, 1 second. Yeah, okay, thank you. Okay, now if you have understood this part, try to solve this question. Okay, Manas, you have got the right answer. Good.
Any other answer? Acid. Okay. David, the question is not how much is percentage by mass. It is saying what mass of SO3 should further be added to it. अरे सॉरी सर. I'll just write the data by that time. We have got 50 का 40% SO3, which is 20 gram was SO3, and remaining we add 30 gram H2SO4. Now it says how much mass of SO3 should further be added to it so that labeling should change from 109 to 115.75. While doing that, I'm not changing the H2SO4, I'm just adding X gram. Let X gram SO3 be added. Total mass of SO3 has become 20 plus X. Na? Total mass of solution कितना हो गया? What is the total mass of solution? Is it 50? नहीं अभी चेंज हो गया ना. कितना? Whatever mass you have added, that is also increasing the mass of the total solution. Na? So this will also be 50 plus X, and that much into 100 will become percentage by mass. और परसेंटेज बाय मास में इंटू 9/40 करके प्लस 100 करते थे. दैट वाज गिविंग यू द परसेंटेज लेबलिंग. इज इट ओके? दिस इज परसेंट न्यू परसेंटेज बाय मास. This much into 9/40 was giving you 9/40 plus 100 was giving you this thing, and that means we are saying 20 plus x by 50 plus x will be equal to, ये देखो 5.75 into 40 by 900 दिख रहा है. Is it okay? Clear a point? Now, if you अगर you can solve it, ये देखो कितना हो गया 5 3/4, so that is 23/4, है ना. 23 into 4 40 is 920 upon 900 into 4, so that is 23/90. Sorry, this was 15.75 ना, तो 400 और add कर दो, not this much. This was 15.75, so that is 15 3/4, so that is 63/4. So 63 630 by 900, that is 0.7 जैसा आ रहा हो, है ना. That's why we'll write 20 plus x is 35 plus 0.7x. So that gives you 1.7x is 15. 1 minute, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ तो गड़बड़ किया. 20x. अच्छा, ये 100 कैरी कर लिया था ना. So 15.75 630,
70 by 100.7. This is 35.7x. 20 plus x. Okay, sorry. This becomes 0.3x, and that is 15. So x becomes 15 by 0.3, and that is 50. So that means it says 50 gram SO3 should be added, should further be. Is it okay? अब यहां से any doubt in this part? Any doubt? Any other method? Anyone? कुछ और किया हो? सर मैंने पूरा नहीं किया, जस्ट लाइक 20 जो हमें सॉरी SO3 कितना मिला था, 20 मिला था ना, तो Yeah. 20 plus x into 9 by 40 equals to 15.75. नहीं ना, 20 प्लस एक्स, हाउ डू यू अज्यूम कि फाइनल मास जो है वो 100 हो गया? दैट वी डोंट नो ना. लकली यहाँ आ गया है, बट इट इज नॉट नेसेसरी ना. मान लो तुम जितना भी ऐड करने वाले तो दैट इज इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ओलियम ऑल्सो, बट हाउ मच विल बी दैट, दैट वी डोंट नो ना. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? एक दूसरा तरीका क्या है पता है? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? एक दूसरा तरीका क्या है? We'll stop working in terms of SO3 after knowing कि how much was SO3. We'll start working in H2SO4, है ना? Okay? H2SO4 तो 30 का 30 रहेगा ना? That is not changing, but you are changing the mass of the total solution. तो mass of total solution अगर change कर रहे हो तो इससे तुम निकाल सकते हो ना. If I am having 115.75% labeling, तो how much is percentage by mass of SO3, ये निकाल के और फिर H2SO4 का निकाल लेंगे. If you do that, 15.75 into 40 becomes 63 upon 9, 7 हो गया. This is 1 minute. This is 70 जैसा आ जाएगा ना. Is it okay? Clear point? Now once this is 70%, so we'll say percentage by mass of percentage. This is second method, which is much easier than this one. So यहाँ से क्या करेंगे? We'll write percentage by mass of H2SO4 must be 30, है ना? So if 30 gram H2SO4 is 30% by mass, तो total mass of volume कितना हो गया? It is 100 gram. इसका मतलब how much SO3 added? That is 50 gram पहले total mass था, you have added some SO3 and the total mass has become 100 gram. That means you have added 50 gram of SO3. This is much easier. कोई भी assumption भी नहीं लेना पड़ा, कुछ भी variable assume नहीं करना पड़ा. Is it okay? सो अगेन जैसा हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन में बोला था ना, व्हाट इज नॉट कॉमन उसमें बात करो, तो यहाँ भी उसमें काम किया जो चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज H2SO4, है ना. H2SO4 was 30 gram. Even if you add SO3, it is not changing the mass of H2SO4. तो उसका परसेंटेज अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा. तो परसेंटेज ऑफ SO3 was changing from 40 to 70. तो परसेंटेज ऑफ H2SO4 has become now 30. So that 30 gram H2SO4 has become 30% of the total mass of volume. So that means total mass was 100 gram. And total mass 100 क्यों हुआ? Because you have added some SO3. As SO3 add किया, पहले 50 था, अभी 100 हो गया. इसका मतलब how much of SO3 you have added? That is 50 gram. So that is another way. So this is easier than the method which I have followed first. Is it okay? अब इसी में एक theoretical क्वेश्चन आता है. अभी ओलियम को हम लोगों ने
फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोला, theoretically or hypothetically I can introduce a term called fumic nitric acid, and then I can create a question in which I can talk about percentage labeling of fuming nitric acid if it is having 60% N2O5 by weight. Try करो जरा इसको. So if you have understood the basic, then only you will be able to solve it. Formula रट्टा मारने से फिर ये क्वेश्चन सॉल्व. ट्राई करो जरा इसको. बिल्कुल नहीं बढ़ेगा तो बता देना. सर रिएक्शन एक बार बोल सकते हो क्या? N2O5 H2O के साथ मिलके HNO3 बनाएगा ना. जैसे SO3 was making H2SO4 by reaction with H2O, वैसा ही we'll write N2O5 plus H2O will give you HNO3. Just you need to balance it properly. Okay. यस सर. और एक बात सर, एक बार ऊपर जा सकते हो क्या? This much. यस सर. Done. सर इसमें 98 H2SO4 का मास था और 80 SO3 98 का. was the molar mass. So if you convert 1 mole SO3, it will produce 1 mole of H2SO4 according to stoichiometry, ना? सर तो इसके इसमें 2 हो जाएगा ना, क्योंकि So now we need to balance that reaction, and then we'll say if you balance it ना, तो सबसे पहली बात तो है यहाँ पे 2 आ जाएगा ना. And that's why we'll say 1 mole of N2O5 will produce 2 moles of HNO3, है ना. So that relation you have to use. Atomic masses में लिख देता हूँ. ऐसे तो easy है यहाँ पे. H का 1, O का 16, N का 14.
Any answer? सृष्टि आज कोई भी आंसर नहीं आ रहा है. सृष्टि, you there? Okay, no problem. But you are understanding now? Param, what about you? हाँ सर समझ रहा है. Ranbir? हाँ सर समझ रहा है. Okay. ट्राई करो ना, मिस्टेक होगा, नॉट अ प्रॉब्लम, वी आर हियर टू लर्न ना. ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, मिस्टेक करो, कोई दिक्कत नहीं है. एटलीस्ट अटेम्प्ट इट, है ना. सो नाउ जस्ट अज्यूम 100 ग्राम सैंपल जो है ना. 2 minutes. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. जिनका बिल्कुल नहीं हो रहा उनके लिए जस्ट मैं हिंट दे दे रहा हूँ. अज्यूम दैट की x ग्राम वाज N2O5 and remaining 100 minus x gram was HNO3, which means before reaction, this is x gram, this is 100 minus x. After reaction का situation निकालो, you'll get that. ये जीरो तो ये कितना? That is the part you have to expand, है ना. यही तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. उसी में x की जगह 60 रख देंगे, whatever they'll give you, वहाँ x की जगह 60 रख देंगे. Yeah, Manas, you have got the right answer. Good. वंश हो रहा है क्या? ट्राई किया लेकिन फिर गिव अप कर दिया. Okay. So basically, if you see the reaction, देव यस सर. हुआ क्या कुछ? नहीं सर, वो कहीं ना So कहीं कुछ छूट रहा है सर मुझसे. देखो ना, 1 mole of N2O5 will produce 2 mole of HNO3, है ना. तो चलो मोल्स में ही काम कर लेते हैं. इफ यू आर हैविंग कंफ्यूजन ना, तो काम कर लेते हैं मोल्स में. x अपॉन इसका मोलर मास कितना? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ N2O5? 28 प्लस 80, 108, है ना. तो दीज मेनी मोल्स वेयर देयर. अब इतने मोल से कितना HNO3 प्रोड्यूस होने वाला था? पहले से तो इतना ग्राम है. मोल्स कितना प्रोड्यूस होने वाला था इसका बताओ? डबल ऑफ दैट, है ना. कोफिशिएंट अगर डबल है तो प्रोडक्शन भी डबल होगा मोल्स के टर्म में. या तो मास में कर लो या मोल्स में कर लो. तो दिस मच इनटू 2 विल बी द मोल्स ऑफ HNO3 प्रोड्यूस्ड. तो अगर मास चाहिए तो इसका देखो, अगर HNO3 का मोलर मास देखोगे, you'll be getting 63 ग्राम. And that's why we'll say this much will be 100 minus x plus, if you solve it, देखो 9 से ये 12 टाइम, ये 7 टाइम, तो 14/12 is 7/6 टाइम्स. ओके. या फिर 18 से डायरेक्टली कर लो, है ना. तो 18 से 126 will be 7 times and 108 will be 6 times. So this much x आ रहा है. And that gives you a very simple formula, 100 plus x upon 6. So if you have started with 100 gram sample, you are getting this much. So percentage labeling का यहाँ एक नया formula बन गया. Percentage labeling of fuming nitric acid will be 100 plus percentage by mass of N2O5 upon 6. And that's why for a sample with
60% by mass of N2O5, we will say percentage labeling will be 100 plus 60 upon 6, that is 110. This will be the answer. Is it okay? देख लो कहीं डाउट है तो पूछ लो. Any doubt? बढ़ जाएंगे. Yes, sir. एक छोटा सा सेक्शन और कर लेते हैं. छोटा है, बात समझने में थोड़ी टाइम लगता है, बट एक बार समझ गए तो फिर मजा आता है सॉल्व करने में. दिस सेक्शन इज कॉल्ड बैक टाइट्रेशन. पहली बात तो ये पता कब चलेगा बैक टाइट क्वेश्चन है. सो देखो बाय डेफिनेशन ही, मैंने बाय डेफिनेशन क्या कहूँ, एक्सप्लेनेशन है दैट इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द कंपोजिशन कंटेनिंग. दो तरह के केसेस मिलेंगे. एक केस मिलेगा, दे विल बी टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रेजेंट विद सम सम इनर्ट इम्प्योरिटी. मतलब एक सब्सटेंस है और उसके साथ कुछ इम्प्योरिटी है. And then at the end they will ask you how much is the percentage of mass of the substance present in the initial mixture, or they may ask you what is the percentage impurity present in the initial sample. ऐसा कुछ होगा. या फिर दूसरा केस होगा, you will be having two substances जो कि एक मिक्सचर होंगे और उसमें बाद में पूछेगा ये कितना और ये कितना. That means they will be giving you two reacting substances जिसके साथ कोई एक रिएजेंट रिएक्ट करने वाला है. they'll ask ultimately that इन दोनों का अलग अलग परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय मोल बताओ. दैट इज द पर्पस ऑफ दिस बैक टाइट्रेशन. फॉर्मेट कैसा रहता है, तो दो तरह के फॉर्मेट्स मैंने बताए. पहला केस क्या है, यू विल बी हैविंग अ सब्सटेंस व्हिच इज गोइंग टू रिएक्ट विद द रिएजेंट, बट इसके साथ कुछ इंप्योरिटी रहेगी. तो ये फ्रेम कैसा बनेगा ना, और जब भी क्वेश्चन आए टाइट्रेशन को तो इस तरह का एरो वाला फ्रेम बना लेते. क्या करेंगे वो बोलेंगे एक सब्सटेंस है जिसका नाम दे देंगे वो. लाइक मैंने यहाँ पर सब्सटेंस ए बोला, उसको क्या करेंगे, कहेंगे कि एक रिएजेंट बी है, एक रिएजेंट है बी, उसको एक्सेस में लिया है, मोर देन रिक्वायर्ड लिया है, और ऐसा करके कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट्स बन जाएंगे. एंड एक्स्ट्रा बी जो बच गया, बिकॉज यू हैव टेकन द बी इन एक्सेस, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा बी बच जाएगा. एंड देन दे विल बी यूजिंग अनदर रिएजेंट कॉल्ड सी. और वो बोलेंगे कितना रिक्वायरमेंट है, दैट दे विल गिव यू. सो इसका जस्ट सफिशिएंट अमाउंट, और विल से स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट विल बी गिवन. And then you'll be having some products. Now if you are having this type of frame, we say it is question of back titration. अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. You see in this whole thing, what is the substance which is reacting with multiple substances? What is that substance? ABC में से कौन है जो मल्टीपल सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट कर रहा है? फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन किसके किसके बीच में है? सिंप्लीफाई करते हैं इसको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन. पहला स्टेप कौन से कौन सी चीजें रिएक्ट कर रही है? A and B. ए एंड बी. दूसरे स्टेप में कौन कौन सी चीजें रिएक्ट कर रही है? Product and extra B. प्रोडक्ट नहीं रिएक्ट कर रहा है. देखो प्रोडक्ट सामने एरो नहीं रखा है, इसका Extra मतलब वी आर B. नॉट सेइंग कि प्रोडक्ट इज गोइंग टू रिएक्ट. तो वो कंडीशन आगे मैं लिख दूंगा, ठीक है. सो बेसिकली एक्स्ट्रा बी इज रिएक्टिंग विद सी, दैट मींस बी इज दैट सब्सटेंस व्हिच इज रिएक्टिंग विद ए एंड सी. इज इट ओके? क्लियर है पॉइंट? Yes, सो व्हाटएवर बी का अमाउंट वाज प्रेजेंट, उसके दो हिस्से हो गए. पहला सेट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में से एक पार्ट जो है ना, वो ए को कंप्लीटली कंज्यूम कर रहा है, और बचा हुआ उसका ग्राम इक्विवेलेंट जो है दैट इज कंज्यूमिंग द सी कंप्लीटली. इज इट ओके? क्लियर है पॉइंट? बट इसमें एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है कि यहाँ जो पहले स्टेप में प्रोडक्ट बना ना, जैसे अभी वंश ने बोल दिया था, तो पहले स्टेप में जो ये प्रोडक्ट बना है ना, दिस शुड नॉट रिएक्ट विद सी, है ना, तभी तो ऐसा कर पाएंगे. So that's why इसका एक कंडीशन होगा, एंड दैट कंडीशन इज, पहली बात की जो इम्प्योरिटी है वो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, दैट इज फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकंड कंडीशन इज
पहले स्टेप के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, वो सी के साथ तो रिएक्ट नहीं करने चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्लियर हम लोग इक्वेशन बना नहीं पाएंगे। दैट इज वन कंडीशन। नाउ व्हाइल डूइंग ऑल दीज थिंग्स, अभी देखो क्या हो रहा है इसमें, साफ साफ पता चल रहा है कि बी का जो भी नेट अमाउंट था दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड इन रिएक्शन विद ए एंड देन बचा हुआ विद सी। इज इट ओके? So can we say gram equivalent of B consumed in first step plus gram equivalents of B consumed in second step will be equal to gram equivalents of A plus gram equivalent of C? You can say that ना, ग्राम इक्विवेलेंट से तो बराबर करते हैं रिएक्शन में ना। इज इट ओके? सर एक बार लास्ट लास्ट लाइन रिपीट कर फिर से बता रहा हूँ, B is the substance which is either getting reacted with A or the remaining part is reacting with C, है ना? ऐसा ही तो हो रहा है। तो B के ग्राम इक्विवेलेंट्स मान लो 100 है, उसमें से 30 ने ए को पूरा कंज्यूम करवा दिया, बचा हुआ 70 जो था वो सी को पूरा कंज्यूम करवा रहा है। तो इसका मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बी इन स्टेप 1 एंड प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन स्टेप 2, दोनों का समेशन शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। इज इट ओके? यस So that's why we can equate the gram equivalent of B consumed in step 1 plus gram equivalent of B consumed in step 2 with summation of gram equivalents of A plus gram equivalents of C. That is the simple calculation का part. इस पूरी कहानी में यही करना है, और एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। So what we are saying that gram equivalents of B consumed in first step, देखो ना ये इसके बराबर होगा ना, सिंपल सी चीज। पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है, ए रिएक्ट कर रहा है बी से, बी एक्सेस में था तो जो एक्स्ट्रा रह गया वो चला गया, और वो जो चला गया दैट इज कंप्लीटली रिएक्टिंग विद ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना, ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी और ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। इज इट ओके? एनी डाउट इन दिस पार्ट? कुछ डाउट है क्या? क्वेश्चन देख के भी दिखाऊंगा ये फॉर्मेट कैसे बनेगा, आई विल शो यू दैट। बट बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट, नाउ इफ आई एम हैविंग इक्वल एन फैक्टर ऑफ बी इन बोथ द रिएक्शंस, वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। बट नॉर्मली तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, दोनों स्टेप में उसका एन फैक्टर इक्वल रहेगा, बट वी कैन स्मार्टली डिजाइन अ क्वेश्चन जिसमें बी का एन फैक्टर बदल जाए। देन वी कांट से कि दोनों का टोटल एक साथ कर लेंगे और कॉमन एन फैक्टर लेंगे, बिकॉज इट इज हैविंग डिफरेंट एन फैक्टर्स इन डिफरेंट केसेस, एंड दैट्स व्हाई अगर एन फैक्टर कॉमन हुआ तो ही एक लाइन का इक्वेशन बनेगा, एंड दैट विल मेक इट मच इजियर देन एनी कैलकुलेशन। इट इज सेइंग सीधा ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बी को ए और सी के ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर कर, सिंपल सा। इनफैक्ट तुमने इस फ्रेम का एक क्वेश्चन किया भी था, वहां किया था मैंने जब एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ाया होगा ना, बिल्कुल स्टार्ट में जब मैंने एन फैक्टर बताया था एसिड बेस रिएक्शन के लिए, तो मैंने तुमको कुछ दिया था वहां पे एक क्वेश्चन दैट वाज इन दिस फ्रेम ओनली। आई जस्ट शो यू। ये देखो थर्ड क्वेश्चन जो सर्कल किया वो दिख रहा है, ध्यान से देखो थर्ड क्वेश्चन। आर वी गेटिंग द सेम पैटर्न? सिर्फ यहाँ इम्प्योरिटी वगैरह नहीं थी, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, बट NaOH वाज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। देखो जरा, NaOH HCl के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH हैज बिकम इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl एंड H2SO4, है ना? इज इट ओके? क्लियर है क्या? यस चलो तो वापस आते हैं यहाँ पे। दिस इज द फ्रेम इन विच विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगर ऐसा रहा, इफ आई एम हैविंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना है अपने को, सीधा जो बीच में चीज आ रही है ना, जो रिएजेंट पहला यूज किया दैट इज बी टाइप का रिएजेंट, दैट will have gram equivalent total equal to the gram equivalent of A plus gram equivalent of C. Is it okay? देखो इसी फ्रेम का एक क्वेश्चन फिर से मैं दे रहा हूं, एंड दैट इज फॉर एसिड बेस रिएक्शन इटसेल्फ।
Wasting में इतना time. Okay. See this question. Are you getting the pattern की ये back titration का question? अगर पता चल गया तो बताओ मेरे को A क्या है, B क्या है, C क्या है, and then you'll get कि समझ में आ गया. If you just know A क्या है, B क्या है, C क्या है तो काम हो गया, क्योंकि उसके बाद तो एक कहानी है और वो है ये लाइन. सर बी तो अमोनिया लग रहा है. B अमोनिया लग रहा है पक्का. वाई अमोनिया B लग रहा है. सर वो मतलब वो बच के वो NaOH के साथ भी रिएक्ट कर रहा है एंड स्टार्टिंग में H2SO4 के साथ भी, right? अमोनिया का सैंपल था, उसको H2SO4 से ट्रीट कराया और फिर उल्टा अमोनिया H2SO4 NaOH will के साथ react रिएक्ट with कर रहा है. both. हाँ जी. H2SO4 भी होगा शायद. और वो क्यों? तो वो कैलकुलेट कर लेता हूँ. देखो ना, ये NaOH है ना, NaOH इज बेस ना मानस. अमोनिया इज ऑल्सो बेस. दिस इज एसिड. अच्छा हाँ. तो कौन सी चीज है दोनों से रिएक्ट करेगी? अमोनिया से भी रिएक्ट करेगी, Acid. NaOH से रिएक्ट करेगी, दैट इज H2SO4 है ना. तो ये फ्रेम जो बना ना, वो ऐसा बना कि अपने पास एक अमोनिया सैंपल है, बट दिस इज हैविंग सम इनर्ट इम्प्योरिटी. सो अमोनिया सैंपल है प्लस सम इम्प्योरिटी इज देयर, वी डोंट नो हाउ मच इज दैट. एंड अभी इसको क्या किया, अमोनिया को रिएक्ट करवाया H2SO4 से, वो एक्सेस में है. और वो एक्सेस में कैसे पता चला? बिकॉज द रिजल्टिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्स अ बेसिक सॉल्यूशन टू न्यूट्रलाइज, है ना. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक सॉल्ट बन जाएगा एंड देन प्लस जो H2SO4 एक्स्ट्रा रहेगा, ये सॉल्ट क्या, NH4 twice SO4 है ना. We'll say this will be NH4 twice SO4. This is the salt. This is product. And ये जो एक्स्ट्रा बच गया, इसके लिए ही NaOH रिक्वायर्ड होगा ना. That will produce Na2SO4 plus H2. So if I'm keeping the label on these compounds, I'll say this is A, this is B, and this is C, है ना. Is it okay? Then तो अभी एक लाइन का क्वेश्चन हो गया. बताओ जरा अभी क्या करेंगे. We'll write gram equivalents of H2SO4 because that is B is equal to gram equivalents of NH3 plus gram equivalents of NaOH. Is it okay? Next step, H2SO4 के लिए you have been given the detail. It is having molarity 0.25, volume is 50 by 1000 because liter में लेना है, into scan factor 2. Assume that कि वो 2 ग्राम में ना X% was NH3. So 2 into X by 100 becomes the mass of NH3. That much divided by 17 will be the moles of NH3, and that much into 1 will be the gram equivalents of NH3. Plus NaOH के लिए 0.2 is molarity into volume in volume in liter into उसका n factor. Acid base reaction में NH3 या NaOH both will have n factor 1 always, है ना, in acid base reaction, and we are talking about here an acid base reaction. तो इसी को solve कर देना. And that's why I told you most of the question of titration or redox titration or volumetric analysis can be framed in just one sentence and then you can solve it. If you solve it, I think I'm having answer for this. It will be coming approximately 19.55. If you solve it now, X will be coming 19.55. That will be the answer. This much percentage is there. This much percentage by mass of ammonia is present in its sample. So the remaining fraction is
fraction, the remaining percentage is percentage of impurity. एक दूसरा फ्रेम है, any doubt in this part? एक दूसरा फ्रेम है और वहीं पे एंड करेंगे आज का लेक्चर। दूसरा फ्रेम है जिसमें ए के साथ इंप्योरिटी नहीं रहेगा, देयर आर टू सब्सटेंसेज व्हिच आर गोइंग टू रिएक्ट विद बी, तो वो ए एंड ए डैश मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, तो ए एंड ए डैश विल रिएक्ट विद बी, द एक्स्ट्रा बी विल रिएक्ट विद सी। इसका मतलब दिस टाइम आई विल राइट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप का एडिशन विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए डैश प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी, है ना? इज इट ओके? इन दिस केस व्हाट वी आर सेइंग दैट ए भी था और ए डैश भी था और वो दोनों रिएक्ट करने वाले, ये दोनों रिएक्ट करने वाले हैं। इसमें बी लिया एक्सेस में एंड देन दैट विल गिव यू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स दैट विल नॉट रिएक्ट विद सी, बट जो एक्स्ट्रा बी बचा है, बी एक्स्ट्रा जो बचा है, दैट इज गोइंग टू रिक्वायर्ड, this is just sufficient amount, it will give you the required amount, or I'll write the required amount. This will be the frame of question. It is also coming in the back titration only. So यहाँ भी कुछ products बन जाएंगे. So basically in this case we say कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, अभी देखो B ही रिएक्ट कर रहा है A से भी, A डैश से भी एंड C से भी. And that's why we can simply write कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ B will be equal to gram equivalent of A plus A dash plus C. So this is going to be the equation. एक क्वेश्चन देता हूं, इसको होमवर्क में करके लाना, बट कहीं कहीं डाउट है तो पूछ लो, पहले तो डाउट है तो पूछ लो कंसेप्चुअली कहीं। एनी डाउट? नो सर। चलो तो एक क्वेश्चन देता हूँ, जस्ट फ्रेम तैयार कर लो, बताओ मेरे को ए ए डैश बी सी क्या है, एंड देन उसके बाद इसको घर पे ट्राई करना आराम से, बिकॉज आई थिंक जो जितने पेस वाले हैं उनके तो मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन मिलेगा, मोस्टली सब मॉड्यूल में मिल जाते हैं क्वेश्चन, ये बहुत ही फेमस है। आई थिंक जेई का ये पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है, 90s में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते थे जब वो सब्जेक्टिव देते थे क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट एंड शो द मेथड। इन दैट पार्ट वॉल्यूमेट्रिक वाज फेवरेट टॉपिक ऑफ जेई, हर साल एक या दो क्वेश्चन आता था बड़ा वाला सॉल्व करने वाला, दिस वाज वन ऑफ देम, वन ऑफ दोस क्वेश्चंस। बताओ जरा ए डैश क्या है, बी क्या है, सी क्या है? व्हाट इज ए डैश बी एंड सी? बहुत सारी चीजें दिख रही हैं क्योंकि उसके बाद तो फिर सीधा इक्वेशन है, यू हैव टू जस्ट चेक कि ये जो स्टेप है यही अप्लाई कर देना है। इफ यू नो ए डैश बी एंड सी ना, तो फिर यहाँ से तो काम आसान हो गया, एक लाइन में इक्वेशन बनेगा, जस्ट वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट द एन फैक्टर्स। एनीवन हु कैन टेल मी ए क्या है, ए डैश क्या है, मतलब ये तो एक्सचेंजेबल है। मैं यहाँ जहाँ ए डैश लिख रहा था वहां क्या लिखूं आप बताओ इस बॉक्स में, व्हाट शुड आई राइट? एनीवन? बिल्कुल नहीं बोलोगे तो कैसे समझूंगा कि बात समझ में आ रही है? सो मैं एक्चुअली समझा नहीं ए डैश का कॉन्सेप्ट। ये देखना, दो चीजों का मिक्सचर होगा, उसमें से एक को मैंने ए बोल दिया, दूसरे को ए डैश बोल दिया। तो लास्ट टाइम जैसे एक सब्सटेंस होता था ना, वी वर हैविंग जस्ट वन सब्सटेंस प्रेजेंट विद इम्प्योरिटी, है ना? द सब्सटेंस वाज देयर एंड इट वाज प्रेजेंट विद इम्प्योरिटी, है ना? यहां पर मैंने सिर्फ यही बोला कि यहां पर इम्प्योरिटी नहीं रहेगी, दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, दैट इज द फॉर्म। ओके सो तो CuS और Cu2S। ओके, लेट्स सी, यहां पर किस चीज का मिक्सचर है? ये Cu2S एंड CuS का मिक्सचर है ना, Cu2S भी है और CuS भी है, और इसी को हम लोग ट्रीट करा रहे हैं KMnO4 से। तो कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं,
प्रोडक्ट्स में इट सेज कि SO2 बनेगा, Cu2 प्लस बनेगा एंड Mn2 प्लस बनेगा। इसमें एक के पास स्कोप था कि वो रिड्यूस भी हो सकता था, इसलिए क्या किया ना, इसने उसको उड़ा दिया। तो पहली बात मैंने बोला था ना कंडीशन में कि प्रोडक्ट शुड नॉट रिएक्ट विद सी, है ना, दैट वाज द कंडीशन, दैट प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट स्टेप शुड नॉट रिएक्ट विद सी। तो यहाँ पे जिस प्रोडक्ट में उनको डाउट हो रहा था ना, देखो लिख दिया है कि द SO2 वाज बॉइल्ड ऑफ, इसलिए इसको हटा दिया, टेंशन ही खत्म। और बोला जो एक्स्ट्रा KMnO4 है ना, ये जो एक्स्ट्रा बचा है उसको ट्रीट कर रहे हैं Fe2 प्लस सॉल्यूशन से, ठीक है। एंड देन सम प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म एंड वी शुड नो दैट कि अगर एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस आता है तो दैट प्रोड्यूसेस Mn2 प्लस एंड Fe2 प्लस गेट्स कन्वर्टेड टू Fe3 प्लस, ठीक है। Fe2 प्लस जब भी रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन के थ्रू इट विल गो टू Fe3 प्लस। तो ये प्रोडक्ट्स बन गए। अभी बताओ मैं A डैश कहाँ लिखूं? व्हाट आर A डैश? किसी एक को A और किसी दूसरे को A डैश बोल सकते हैं ना। Yes, sir. व्हाट इज B हियर? So KMnO4. KMnO4, दिस इज B। एंड व्हाट इज C? Fe2 plus. Fe2 प्लस सॉल्यूशन, है ना। बस इतना ही करना है। और इसी में अब क्या लिख देना है कि एक लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, बिकॉज इसका एन फैक्टर नहीं चेंज हो रहा है इसलिए एक साथ ही लिख दिया, दैट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu2s प्लस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CuS प्लस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2 प्लस। बस इतने से काम हो जाएगा। अभी अजम्पशन ले लो, किसी एक को x ग्राम मान लो, फिर उसके मोल्स निकाल लो, एन फैक्टर बहुत ही केयरफुली देख लेना क्या होगा, एंड देन वी कैन कैलकुलेट इट, ठीक है। इसको ट्राई करके रखोगे, इफ यू वांट तो आई विल गिव यू द आंसर आल्सो। नहीं सर, फिर वो बायस हो जाता है। ठीक है, नहीं दे रहा, बट इसमें कैलकुलेशन लगेगा, इफ यू नीड ना तो कैलकुलेटर यूज कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन 90s के टाइम का आया हुआ है, उस समय वो टफ कैलकुलेशन भी दे देते, पता नहीं क्यों बट देते, ठीक है। तो नंबर विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। इसको ट्राई कर लेना। और एक और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आई शेयर द नोट्स, ये वाला नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो थोड़ा और अलग है, थोड़ा टफ है बट सोचना पड़ेगा। वो भी आई थिंक कि जेई ने पूछा दिस क्वेश्चन, इसमें जरा सी बात अलग हो गई है, वो देखना क्या है, बट केयरफुली इसको चेक कर लेना। सो आई शेयर दिस PDF एंड दोनों क्वेश्चन ट्राई करके रखोगे ना। नेक्स्ट वीक में अभी दो ही टॉपिक बच गया है, एक आयोडोमेट्रिक आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन बच गया, एक है डबल टाइट्रेशन, ये दो टॉपिक बचे हुए। नेक्स्ट वीक में वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है। ओके चलो क्लोज करते हैं ना। चलो जी, बाय एवरीवन। बस, बस। थैंक यू सर।